because of lack of confidence. So we have two options here. First is creeping on, blaming on why this language has given so much importance. And second one is that I better learn it. And I appreciate you all have chosen second one by joining this workshop. For improving language, school doesn't matter, medium doesn't matter. What is matter, that is dedication and motivation. For giving that proper motivation, we have organized 2 days workshop on English fluency and language enhancement. For this workshop today, we have expert of speaking English course. So may I request to my colleague, Assistant Professor, Mr. Patil SN sir, to introduce today's resource person. Thank you so much. Hello. Hello and good evening to all of you. My name is Patil SN, Assistant Professor of MES College of Education Vita. I am going to introduce to resource person. It's my honor to talk about the trainer who is going to deliver this course, and I had to introduce him in brief. His name is Pratish Siddham Shettiwar. He has studied masters in English literature and holds an EFL qualification. He has studied it from Bangkok, the Kingdom of Thailand. Cambridge CLETA is considered to be quite celebrated courses, which is delivered by the University of Cambridge and is considered as the most rigorous one in the field of English languages teaching. Cambridge CLETA trainers are considered to be the best trainer in the world when it comes to teaching non-native speaker in the world. As an EFL trainer, he has got 14 years of teaching experience. He has trained the professionals and the students at the various places in the India and overseas like Bangkok, Phuket, Dubai, and Muscat, the Sultanate of Oman. Presently, he is working as an educator and trainer with EFL and an academy, the well-known digital educational startup in the country. So thank you for the organizer committee. May I request to Salve ma'am, please continue the rest of program. Thank you. Thank you very much, Patil sir. Now, may I request our principal and Dean of Interdisciplinary Studies, Shivaji University, Kolhapur, Dr. M.V. Guloni ma'am, to express keynote address. Good evening, everybody. Yes, good evening, everybody. It gives me immense pleasure to inaugurate and give the keynote address of this 2 days workshop of English fluency and language enhancement. It gives me great pleasure to welcome our today's resource person, Siddham Shettiwar sir. I also am very much happy that one of our colleagues, Dr. Salve madam, Mrs. Salve madam, very soon she will be doctor. Salve madam has organized this workshop, which is of great importance in everybody's life today. Our modern education societies, this Chintamani Kondopanta Gulavani Educational Campus, our B.Ed college has organized this workshop, and nowadays all of us know that without English it's impossible to communicate, not only for the outer world, that is out of our nation, but within our nation, within our India. So many languages are spoken. In each state we have got different language.
if we cross the bond. Guloni ma'am, I'm sorry to interrupt. Hello. Guloni ma'am, would you Yes. please start your video? Okay, sir. Okay, Yeah, but yeah. I was not able to start because I No, think, no, you can now. You can now. okay, sir. Okay, Yeah, okay. please, I please. will start. Yes. Just a minute, I will add this. Okay. Yes, ma'am. We would be more Now I comfortable. think, yeah, I'm audible and visible also. Yes, ma'am. Yes, Yes. yes. Very Okay. much. Okay. So I was talking that English is of great importance because communication is very important in human life, because that is our silent feature, or that is our feature of human beings, that we can speak and we can communicate and we can use language and we can express our feelings and thoughts in language while talking, while speaking. So this is very important, that being a human being, we have to communicate, and for communication we have to use languages. But as I was talking, that we are Marathi speaking people from Maharashtra, but we cross our boundary, that is from our place. If we go 100 kilometers away, then we cannot use our language, we cannot communicate with the people there, because the language of Karnataka is Kannada, the language of Gujarat is Gujarati. Hindi speaking areas, we cannot speak Marathi with them because they cannot understand Marathi, and sometimes we cannot understand Kannada or Telugu or Tamil, etc. So within India also, it's a language of communication. That as India is a multilingual state, multilingual nation, for communication we have to use English language. So that is very important, that English is a language for communication within our nation. It is a language for communication all over the world. That is, it is recognized that English is the language of communication anywhere in the world. Wherever you go, you can communicate with the people in that other nations with English only. So that is also a very important thing, that is out of India. It is important that you should know English. And the most important thing, English is the language of literature. I think 80 or 90, maybe more than 90% of literature of all the world is in English. It is translated in English. So if we want to study anything, if you want to read anything, you can read a lot if you know English. So it is a very important thing. It is a language of communication. It is a language of literature. It is a language that is the most easy language in the world. We are all very much afraid of English. We are very much afraid of speaking English, though we have good communicate. We have good knowledge of English. It is difficult for us to communicate. But if we compare English with Marathi, you will find that Marathi is much more harder than English, because there is the gender difference, that we have masculine, feminine, and neuter gender, and so many other things, that is rasva, dirgha. So many minor things are there. We have one word having so many meanings. So in English, it's so easy. And nowadays, it is Indian English, we can say, that we can use the words which cannot have equivalent in English also. That is also allowed, because today, whatever today's feeling, today's opinion is, you must understand the feeling. So for that, you must have the communication skill. You have fluency in English. That is very important, because many of us, many of Marathi medium students also and English medium students also, they have got good English. Their grammar is good. Their language is good. They have good vocabulary. But the problem is that we have some kind of inferiority complex, that I will not be able to speak English. If I will speak something wrong, people will say, they will laugh at me. But I will give one example, that you see, when Kannada people come to our state in Maharashtra, they speak Marathi. They are not afraid of that. They are not afraid that anybody will laugh at them. They can speak wrong Marathi.
But whatever they want to speak, they speak with us. We don't have that kind of feeling. We have that inferiority complex, and we are afraid of people laughing at us. So that we should come out of this type of inferiority complex, and we should think that yes, I can speak English. I know English, though I don't know grammar, though I haven't studied English at any level. I can speak. In Kerala also, in Karnataka also, if you go, you can see the waiters and the drivers and the taxi drivers, etc. They are speaking fluent English. Have they gone to school? No, they may have not learned at all, but they speak fluent English because it's a thing of practice and confidence. So I feel that all of us can have this type of confidence. This confidence we can gain through this 2 days workshop. As our Save madam has told us, this is a type of kind of motivation for all of us that we can do it. And everywhere we see that this is nowadays one keyword that yes, I can do it. So all of us should think that yes, I can speak English fluently, and we will speak after this workshop. I feel that we will be able to get over that inferiority complex, and if that is done by this 2 days orientation, the aim of our workshop, we have achieved that, we can say. Once again, I am very much thankful to Siddham Settiwar sir, who has accepted our invitation and had joined this workshop for giving his guidance to the participants. I also congratulate Salve madam for organizing this workshop. I wish all the success to this workshop. Thank you, and welcome to all of you. Thank you. Thank you very much, Gulon ma'am, for enlightening us with your valuable guidance. Now, I know that you are very eagerly here to Pratish sir. So without wasting time, I request Pratish sir to carry on the session. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. I welcome you all to this exciting session. Respected Dr. Soumegha Guloni ma'am, the principal of MES College of Education, Vita. She's also the Dean of Interdisciplinary Studies at Shivaji University, Kolhapur. Respected Sharbila Salve ma'am, she's Assistant Professor with MES College of Education, Vita. And respected Patil sir, thank you so much. And good evening to all my dear friends present here on Zoom platform and at the same time on YouTube. Right. Guloni ma'am she rightly said that we need to practice, right, without thinking too much. Whether we are going to make mistakes or not, we have to start speaking. And that is what the skill learning is all about. I won't talk anything. I'll start the session straight. See, first of all, we need to stop looking at English as a subject now. We need to start looking at English as a skill, because there is a difference between the way we learn a subject and learn a skill. We've been learning English as a skill, subject. We've been learning English as a subject for many years, ever since we started going to school. Now the time has come. We need to start learning English as a skill. Because when we learn something as a skill, just as Guloni madam bollat ki skill काय असतं? Skill, it's actually, you have to learn it while doing it. चुकांबद्दल विचार करून नाही चालणार आपल्याला सुरुवात करावं लागेल कुठेतरी. And that is what the skill learning is all about. जगातल्या सगळ्या स्किल्स जर आपण बघितलं, आपण वर्गात बसून स्किल्स कधी शिकत नसतो. वी स्टार्ट डुईंग दॅट थिंग. एखादी गोष्ट करायला सुरुवात करतो, करता करता while doing that we learn the skill, we learn the rules of that game. स्किल इस तरह से एक्वायर की जाती है. आज तक हम लोगों ने जो इंग्लिश सीखी है, that we learned English as a subject because we were getting prepared for that exam. Now we don't need to prepare for the exam. Now we have to use it English in a conversation. आता आपल्याला त्या संभाषणामध्ये इंग्रजीचा वापर करायचा. So we have to be fluent. आणि मॅडम जसे बोलल्या की इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इंग्रजी खूप कठीण नाही. It's easy, quite easy. Just we have made it look like difficult. It's not difficult at all, but it's quite easy. आपण त्याला कठीण बनवलेलं आहे. So we need to change that perspective.
आम्हाला तो पर्स्पेक्टिव्ह कुठेतरी चेंज करावा लागेल. आणि महत्वाची गोष्ट, एक एक जो न्यूनगंड आहे की आपण बऱ्याच ठिकाणी आपण म्हणतो की वी गिव्ह द एक्सक्युजेस की सर माझं शिक्षण मराठी माध्यमातून झालंय त्याच्यामुळे इंग्रजी येत नाही. स्टॉप, वी नीड टू स्टॉप गिव्हिंग दोज एक्सक्युजेस. आता आपल्याला यापेक्षा जास्त दुबळं नाही बनता येणार. It's okay that we haven't been exposed to English medium education. Okay. तुलनेत जे लोक इंग्रजी शाळेत जातात त्यांची इंग्रजी बरी असते, पण याचा अर्थ असा नाही की आपल्याला इंग्रजीचं एक्सपोजर नाही त्याच्यामुळे आपण इंग्रजी शिकायचंच नाही. नो, इट्स रॉंग ऑन युअर पार्ट. आणि इट्स नॉट लाईक दॅट. जर तुम्ही ठरवलं अँड यू नो दॅट इम्पॉर्टन्स, मला आता इंग्रजीचं इम्पॉर्टन्स काय ते सांगायची गरज नाही, बट यू नो दॅट, आणि तुम्ही जर ठरवलं, इफ you're ready to give your 100%, and if there is a passion, there is an excitement, and there is a will to learn, I can surely say that what people are doing it, people have been doing it for years. Sangli Ingraji, right? You can speak good English in 6 months. In a year's time, eka varshat, you can speak excellent English. There is nothing at all. It's quite simple. So on this positive note, start. बऱ्याच लोकांचे परत आणखी काही मिसकन्सेप्शन्स असतात इंग्रजी संदर्भात. इज इट ओके इफ आय कंटिन्यू इन मराठी और इंग्लिश? इट्स ओके. मराठी, आर यू कम्फर्टेबल विथ मराठी, एव्हरीवन? Yeah, no problem. No problem. Okay. Sir, little bit Hindi also. Okay, little bit Hindi. Okay, fine. So there are two misconceptions again. दोन मिसकन्सेप्शन्स, दोन काय म्हणू चुकीच्या समजुती, रॉंग कॉन्सेप्ट्स, रॉंग आयडियाज दॅट वी होल्ड ऑन टू. बऱ्याच लोकांना असं वाटतं की माझ्याकडे शब्दसाठा नहीं है, मेरे पास उतनी वोकैब नहीं है, आई डोंट हैव मच वोकैब. रॉन्ग, पूरी तरीके से गलत है. आपको इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने के लिए वोकैब की जरूरत नहीं है. जितने वर्ड्स आपके पास है, जितका शब्दसाठा आज आपल्या जवळ आहे तितका पुरेसा आहे. दॅट्स इनफ. यू डोंट नीड मच वोकैब. जस्ट यू नीड टू नो हाउ टू यूज दॅट वोकैब. तो वोकॅब नेमकी कसं वापरायचं आहे, दॅट इज व्हॉट यू नीड टू लर्न. यू डोंट नीड. अगदी चुकीचं आहे. देन देयर आर पीपल एक्चुअली दे काम होते कि सर मेरा ग्रामर बहुत अच्छा नहीं है, या फिर कुछ लोगों का ग्रामर अच्छा होता है, बट आई टेल यू वन थिंग, यही मेरी खासियत यही है कि मैं ये बोलता हूँ कि इंग्लिश में अभी जो ग्रामर, बिकॉज वी लर्न अ लॉट ऑफ ग्रामर बॅक एट स्कूल अँड कॉलेजेस. शाळेत आणि कॉलेजमध्ये असताना आपण भरपूर ग्रामर शिकलो. आता आपल्याला तितकं बेसिक ग्रामर परत शिकण्याची मुळीच गरज नाही. I'll tell you one thing, the entire grammar, अख्खं ग्रामर, इंग्रजी फ्लुएंट होण्यासाठी लागणारं जे अख्खं ग्रामर आहे, that is just for 2 minutes. It might be shocking to many of you. कदाचित बऱ्याच लोकांना हे धक्कादायक असेल की सर 2 मिनिटाचं. येस, मैं खुद बोल रहा हूँ because I've been teaching English for the last 14 years, over 14 years. And I got an experience of teaching English to the students from around 20 different countries. इतने नेशनलिटीज के बच्चों को मैंने पढ़ाया है. सो आई कैन से इट्स नॉट माई ओवर कॉन्फिडेंस. I'm just telling you based on my experience. You don't need grammar more than 2 minutes. 2 मिनिटापेक्षा ग्रामरची गरज नाही. याचा अर्थ असा आहे का की सर मग आपण चुकीचं वाक्य बनवायचे का, चुकीची इंग्रजी? इट्स नॉट लाईक दॅट. असंही नसतं. राईट, विल बी स्पीकिंग फ्लॉलेस इंग्लिश, अगदी करेक्ट इंग्लिश. एक स्टँडर्डाइज्ड जगभरामध्ये जी इंग्रजी वापरली जाते तीच इंग्रजी आपल्याला बोलायची आहे. बट जस्ट वी नीड ओनली 2 मिनिट्स. कारण भरपूर ग्रामर आपण शिकलेलं आहे. आता आपल्याला ते फक्त ग्रामर कसं एक्झिक्यूट करायचं ते शिकायची गरज आहे. दॅट्स इट. कारण वी आर मच्युअर्ड नाव. कारण आपण आता मच्युअर्ड झालेलो होतो, मोठे झालेलो. वी गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर. अपन साइकोलॉजिकली इवॉल्व झालेलो आहे. हम सारी चीजें समझ सकते हैं. तो अभी इस जगह पे अगर मैं वही चीजें बेसिक तरीके से सीखने की कोशिश करूं जो चीज मैं 5वीं 6वीं में करता था, तो फिर मेरे एज का डिफरेंस क्या है? कोई फायदा ही नहीं है. इतना बड़ा होके फिर अगर वही चीज फिर से शुरू करूं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड ऑल दैट, नो. वी नीड टू चेंज द मेथडॉलॉजी ऑफ लर्निंग एज वेल. ज्या प्रकारे आपण इंग्रजी शिकतो त्यामध्ये सुद्धा कुठेतरी मोठा बदल करण्याची आज आपल्याला गरज आहे. So just for 2 minutes, right? 2 minutes of grammar. So we'll start the session. So are you ready? कदाचित तुम्हाला, you may not believe that कि grammar 2 minutes, but yes, बाकी सगळा common sense.
आणि जो 2 मिनिटाचा ग्रामर जे मी तुम्हाला सांगणार आहे दॅट एव्हरीवन नोज, सगळ्यांनाच माहिती आहे. मी काही वेगळ्या ग्रामर नाही शिकवणार. आय एम नॉट जीनियस, राईट. आय गॉट एन एक्सपिरियन्स, दॅट्स इट. माझ्याकडे फक्त अनुभव आहे, दॅट्स इट. एंड इंग्लिश इज नॉट अ मार्क ऑफ बीइंग जीनियस. किसी को अंग्रेजी अच्छी आती है तो वो जीनियस है, बहुत ब्रिलियंट है, ऐसा नहीं है, राइट. इट्स मॅटर ऑफ प्रॅक्टिस, दॅट्स इट. फक्त 2 मिनिटाचा ग्रामर आहे. द रेस्ट इज कॉमन सेन्स, just common sense. You have to apply your common sense and we can be fluent. We'll move up. देखते हैं हम लोग सेशन में कि किस तरह से कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके हम लोग इंग्लिश सीख सकते हैं. सी फ्रेंड्स, कुछ चीजें होती है हम लोग सालों से बरसों से करते आ रहे हैं बट कभी उसको ऑब्जर्व नहीं किया, एनालाइज नहीं किया वो सारी चीजों को. ऑब्झर्वेशन आपलं कुठेतरी कमी पडत आलेलं असतं. बघा, कुठलंही संभाषण करताना आपण नेहमी 3 टाइमलाईन मध्ये बोलत असतो. कुठलंही असो, 3 टाइमलाईन मीन्स व्हॉट? टेन्सेस, ज्याला काळ म्हणतो आपण. 3 टाइमलाईनला आपण टच करत असतो. आयदर वी टच प्रेझेंट, पास्ट, फ्युचर. कधी आपण एखाद्या वाक्यामध्ये प्रेझेंटला टच करतो, कधी पास्टला टच करतो, कधी फ्युचरला. अरे मी उद्या तिथे जाणार आहे, मी उद्या तिथे जाईल, फ्युचरला टच करतो. इनएव्हिटेबली प्रत्येक वाक्य बोलत असताना, संभाषण करत असताना वी टच टाइमलाईन. आयदर वी टच प्रेझेंट, पास्ट और फ्युचर. एक गोष्ट तुम्हाला इथे लक्षात ठेवायची, बऱ्याचदा संभाषणामध्ये आपण कधी कधी एकाच टाइमलाईनला टच करतोय. कधी प्रेझेंटलाच टच करतोय, कधी पास्टला आणि कधी फ्युचरला. अँड यू नो व्हॉट, मला एक गोष्ट इथे सांगायला आवडेल की 90% ऑफ द पीपल वेन दे टच सिंगल टाइमलाईन, एक वाक्य एका टाइमलाईनला टच करून बोलताना, दे नेव्हर गेट स्टक. दे डोंट फाइंड एनिथिंग डिफिकल्ट. They're very much fluent. They're very much fluent when they have a conversation, touching just one timeline at a time. ज्यावेळी एका टाइमलाईनला टच करून बोलायची वेळ येते, 90% लोकांना कुठेच अडचण येत नाही. दे फाइंड इट क्वाईट कम्फर्टेबल. पण माहितीये तुम्हाला की ज्यावेळी आपण संभाषण करताना आपल्याला कधी कधी एकाच वेळी 2 टाइमलाईनला सुद्धा टच करावं लागतं. देर एक्झॅक्टली द प्रॉब्लेम स्टार्ट्स. तिथे कुठेतरी नेमकी अडचण निर्माण होते की ज्यावेळी आपल्याला बोलताना 2 टाइमलाईन मीन्स काय? कधी पास्ट आणि प्रेझेंट अशा 2 टाइमलाईनला टच करून बोलतो. कधी 2 पास्ट असतात, एक पास्ट, सिनियर पास्ट, मोठा पास्ट आणि दुसरा पास्ट. कधी कधी 2 फ्युचरला टच करून बोलावं लागतं. देर एक्झॅक्टली पीपल लँड इन ट्रबल. हीच कॉन्सेप्ट लोकांना नाही, त्याच्यामुळे बेसिक सगळ्या गोष्टी येऊन सुद्धा दे आर नॉट एबल टू एक्झिक्यूट करता येत नाही. अँड दे लँड इन ट्रबल. आणि तिथे कुठेतरी मोठी अडचण तयार. अँड मला सांगायला आवडेल की इफ यू जस्ट नो, जर तुम्हाला ही गोष्ट जर लक्षात आली, इफ यू आर एबल टू डिफरेन्शिएट वेदर आय एम टचिंग 1 टाइमलाईन और 2 टाइमलाईन्स, बोलताना, वाक्य बनवताना जर आपल्याला इतकं लक्षात आलं की मी एका टाइमलाईनला टच करतोय की 2 टाइमलाईनला टच करतो, एक टाइमलाइन को टच कर रहा हूं या 2 टाइमलाइन को, ये चीज अगर हमें समझ में आई तो मुझे लगता है 70% लैंग्वेज हमारी ऐसी बन जाएगी. बिलीव मी, 70% लैंग्वेज हमारी बन जाएगी वैसे ही. दैट्स इट. और बाकी जो 30% लैंग्वेज, मैं खुद मानता हूं कि सारे लोग, आप में से सारे लोग 30% लैंग्वेज में फ्लुएंट है. एवरीबडी इज फ्लुएंट इन 30% ऑफ द लैंग्वेज, दैट आई एम श्योर अबाउट. आप लोगों को भी पता है. व्हेन इट कम्स टू यूजिंग सिंपल स्ट्रक्चर्स, ज्यावेळी आपण सोपे वाक्य असतात, व्हॉट्स युअर नेम, व्हॉट यू वॉन्ट, व्हॉट्स युअर फादर्स नेम, वेर यू लिव्ह, कॅन आय गेट अ ग्लास ऑफ वॉटर. इफ यू लुक एट द सिंपल स्ट्रक्चर्स, हे सगळे सिंपल स्ट्रक्चर्स वापरताना वी डोंट थिंक एट ऑल. आपण कधीच विचार करत नाही. वी डोंट थिंक इवन अबाउट ग्रामर, नॉट वोकॅब, नथिंग. अगदी कम्फर्टेबली हे सगळे स्ट्रक्चर्स आपण बोलत असतो. सो वी कॅन से दॅट ॲज फार ॲज these structures are concerned, we are fluent in those structures. या सगळ्या स्ट्रक्चर्स मध्ये आपण फ्लुएंट आहोत. दॅट इज व्हॉट द फ्लुएन्सी इज ऑल अबाउट. आणि त्याच वाक्यात आपण फ्लुएंट होऊ शकतो जे वाक्य आपण वारंवार वापरत आलो आहेत. जे वाक्य आपल्या डोक्यातच नाही, जे वाक्य रचना आपल्या डोक्यात नाही, आपला एक्सपोजर नाही, त्या वाक्य रचनेत आपण कधीच फ्लुएंटली बोलू शकत नाही. आणि असे जे स्ट्रक्चर्स आहे, सिंपल स्ट्रक्चर, दॅट कॉन्स्टिट्यूट, दोज स्ट्रक्चर्स कॉन्स्टिट्यूट 30% ऑफ द लँग्वेज, एंटायर लँग्वेज. मग असं आपल्याला म्हणता येईल की सगळेजण आपण एक जवळपास 30 ते 40% फ्लुएंट आहोत. 30 ते 40% इंग्रजीमध्ये आपण फ्लुएंट आहोत. 70% just learn to differentiate the structure, single timeline, 2 timelines. The rest will check and care of. सगळ्या गोष्टी आपोआप येतील. So let's move on.
Is it visible? Is it visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Right, right, right. Yes, It's a sir. workshop. Yes, sir. It's a workshop. तर मला तुम्हाला काही गोष्टी नक्की सांगाव्या लागतील. Right? I need to explain certain things so that, right. So we touch 3 timelines. आपण 3 टाइमलाईनला बोलत असतो. मी जसं म्हटलो की सिंगल टाइमलाईनला ज्यावेळी आपण टच करून संभाषण करतो, वी फाइंड इट क्वाइट इझी. फॉर एक्झाम्पल, मला जर असं म्हणायचं असेल की तो अब्सेंट आहे, काय वाक्य असेल इंग्रजीमध्ये? तो अब्सेंट आहे. टेल मी, काय असेल? तो absent आहे ना सर? येस, He was absent. He is absent. He is is absent. absent. राईट? बरोबर, Yeah. ही इज अब्सेंट. राईट. आता मला म्हणायचंय की तो अब्सेंट होता. He was absent. Was absent. राईट, परफेक्ट. ही वॉज अब्सेंट. तो अब्सेंट राहील He is not absent. ना, राहील He राहील. will be absent. He will be absent. He will be absent. He will be Okay? absent. He will be absent. मी हे 3 वाक्य यासाठी लिहिलं. आपण जसं म्हटलं की देर आर 3 टाइमलाइन्स वी टच. इफ यू लुक ॲट द फर्स्ट एक्झाम्पल, पहिल्या वाक्याकडे बघितलं, सो वी आर टचिंग. जरा स्पीकर आहे ना कुणाचं असेल सुरू तर बंद ठेवा थोडंसं. ओके, राईट. इफ यू लुक ॲट द फर्स्ट स्ट्रक्चर, ही इज अब्सेंट. कुठली टाइमलाईन आहे? दिस इज प्रेझेंट टाइमलाईन. बरोबर, Present. right? This is present timeline, right? He's absent, present timeline. He was absent. I'm using past timeline, right? He will be absent. I'm touching future timeline. So, अशा वाक्यामध्ये जवळपास 90% लोकांना कुठेच अडचण होत नाही. They find it quite easy. आप लोगों को भी दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत नहीं आती. He's absent, यार, he was absent and he will be absent. It's so simple stuff. पण मला आता म्हणायचं की तो 3 दिवसापासून अब्सेंट आहे. तो 3 दिवसापासून is- अब्सेंट आहे. He Yes? was. He is absent since 3 days. He was Since 3 days, he is absent. He was absent from 3 days. He was He absent is absent for the since 3 past days. 3 days. Okay. Since 3 days, he is absent. Okay. So thank you so much for these answers. Baka. When we look at this structure, he is absent, he was absent, he will be absent. सगळ्या लोकांची अशीच वाक्य आली होती तीनही. Am I right? सगळ्यांनी ही इज अब्सेंट बोलले, सगळेजण ही वॉज अब्सेंट बोललात आणि सगळेजण ही विल बी अब्सेंट असं बोललात. एम आय राईट? बरोबर आहे अगदी? Right? पण ज्यावेळी आपण असं म्हटलो की तो 3 दिवसापासून अब्सेंट आहे, सगळ्यांचे जे उत्तर आहेत ते वेगवेगळे आहेत. सो देर इज नॉट वन पैटर्न, अ यूनिक है ना, यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं, यूनिफॉर्मिटी नहीं है. ऐसा क्यों? जब हम लोग किसी का नाम पूछते तो हम लोग पूछते कि व्हाट्स योर नेम, बिकॉज इट्स अ स्टैंडर्डाइज्ड पैटर्न एंड एवरीवन नोज दैट. फिर वो 3 दिन से अब्सेंट है, कोई बोल रहा है कि इज अब्सेंट फ्रॉम 3 days, कोई बोल रहा है ही वाज अब्सेंट, कोई बोल रहा है कि वाज अब्सेंट सिंस. इस तरह से कुछ हो रहा है, अलग अलग चेंज हो रहे. क्यों? क्योंकि हम अपने मन की लैंग्वेज बना रहे हैं. क्योंकि इस लैंग्वेज के साथ, ये स्ट्रक्चर्स के साथ शायद मेरा एक्सपोजर नहीं है. तो ऐसे स्ट्रक्चर में ये अभी ऐसा बनेगा, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन में यही स्ट्रक्चर कुछ दूसरा बन जाएगा. उसकी कुछ यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, वो चेंज होते रहेगा. तो हमें एक चीज ध्यान में रखने. बट थैंक्स फॉर द रिस्पॉन्सेस. राइट, थँक्यू सो मच. तर बघा, आपण ज्यावेळी असं म्हणतो की तो 3 दिवसापासून अब्सेंट आहे, मला थोडंसं असं सांगता येईल का? तो 3 दिवसापासून अब्सेंट आहे याचा अर्थ तो आताही अब्सेंट आहे, तो काल पण अब्सेंट होता, तो परवा पण अब्सेंट होता आहे. एम आय राईट? बरोबर? Yes, sir. राईट. मग आपल्याला असं म्हणता येईल का, आपल्याला असं म्हणता येईल का की तो 3 दिवसापासून अब्सेंट आहे या वाक्यामध्ये आपण कुठेतरी एकाच वेळी 2 टाइमलाईनला टच करतोय की नाही करत? Yes. करतोय. कुठल्या, राईट, कुठल्या 2 टाइमलाईनला टच करतो आपण? Present and past and present. प्रेझेंट आणि पास्टला टच करतो. पण बोलताना आपण कसा प्रवास आहे आपला? पास्ट टू प्रेझेंट असा प्रवास आहे. बरोबर? इज इट क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. Yes, sir. प्लीज थोडंसं आहे ना, स्पीकर्स ज्यांच्याकडे आवाज आहे मागे, प्लीज थोडंसं स्पीकर्स तुम्ही म्यूट ठेवा प्लीज. राईट, राईट. युअर ऑल है ना, तुम्हाला कळतंय त्या सगळ्या गोष्टी. राईट. सो 3 दिवसापासून अब्सेंट आहे या वाक्यामध्ये आपण कुठेतरी 2 टाइमलाईनला टच करतो. वी आर टचिंग 2 टाइमलाईन्स ॲट द सेम टाइम, पास्ट अँड प्रेझेंट, अँड वी आर स्पीकिंग फ्रॉम पास्ट टू प्रेझेंट.
इज इट क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? हे सगळ्यांना कळलंय? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मला सांगा आता, बघा राईट, हे डिफरेन्शिएशन आल्यानंतर आपल्याला नेमकं काय करायचंय मला सांगा. या पहिल्या वाक्यात ही इज अब्सेंट, मी फक्त एकाच टाइमलाईनला टच करतो. ही वॉज अब्सेंट, मी फक्त एकाच टाइमलाईनला टच करतोय. पास्ट, ही विल बी अब्सेंट, फक्त एकाच टाइमलाईनला मी टच करतोय, दॅट इज फ्युचर. राईट, टेल मी, हा जो इज आहे राईट, या इजचा पास्ट टेन्स काय होतो? Was. वॉज. राईट, हे सगळ्यांना माहिती आहे राईट. हा इज जर V1 असेल तर वॉज काय? V2 आहे, बरोबर राईट. पास्ट टेन्स मध्ये आपण V2 म्हणतो. अगदी सोपे शब्द आपण वापरूया है ना, आपण कॉम्प्लिकेटेड नाही करू की प्रेझेंट पास्ट पास्ट पार्टिसिपल वगैरे नाही म्हणू आपण. V1 V2 V3 असं वापरूया, सो दैट इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड. लैंग्वेज हमारी अच्छी होनी चाहिए, किसको क्या बोलते उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा राइट. सो V1 V2 V3, देखिए ये क्या है बी, दिस इज ऑल्सो V1. अब मुझे बताएं, एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, जब मैंने प्रेजेंट टाइमलाइन को टच किया मैंने V1 यूज किया, जब मैंने पास्ट टाइमलाइन को टच किया मैंने V2 यूज किया, मैंने फ्यूचर टाइमलाइन को टच किया मैंने V1 यूज किया. अब मुझे बताइए, ज्यावेळी आपण असं म्हणतोय की तो 3 दिवसापासून Excuse me, अब्सेंट sir. आहे. येस Hello. येस मॅम. So somebody's mic is on. Right. Please tell them to mute. सगळ्यांना म्यूट करू का? प्लीज, किसका स्पीकर सुरू आहे? Yes, sir. Yes. म्यूट करा. हा तुम्ही क्वेश्चन विचाराल तेव्हा ऑन करा. असं करू? ठीक आहे मॅडम, असंच करू. ओके फाईन. सो ज्यावेळी आपण असं म्हणतोय की तो 3 दिवसापासून अब्सेंट आहे, वी आर टचिंग 2 टाइमलाइन्स राईट, दॅट इज पास्ट अँड प्रेझेंट. एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवायची है ना, वेन एव्हर वी टच 2 टाइमलाइन्स, कुठल्याही सर्कमस्टान्सेसमध्ये पास्ट प्रेझेंट असो किंवा पास्ट आणि पास्ट वेगवेगळे पास्ट असतात, एक पास्ट आणि त्याच्या आधीचा पास्ट, किंवा फ्युचरमध्ये सुद्धा एक फ्युचर आणि त्याच्यानंतरचा फ्युचर, असं कुठल्याही सर्कमस्टान्सेसमध्ये ज्याच्या वेळी वेन वी टच 2 टाइमलाइन्स ॲट द सेम टाइम, आपल्याला एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, वी हॅव टू यूज V3. बस, इंग्रजीतलं जे ग्रामर मी तितकंच तुम्हाला सांगतोय, दॅट्स इट, बेसिक ग्रामर 2 मिनिटासाठी राईट. त्यावेळी ज्यावेळी आपण 2 टाइमलाइनला टच करू, विल यूज V3, आपल्याला V3 यूज करायचा आहे. आणि दुसरा जो नियम आहे इंग्रजीचा, V3 आपण एकटा कधीच वापरत नसतो. वी ऑलवेज यूज V3 विथ हॅव, हॅज और हॅड. आपण नेहमी V3चा वापर असा करत असतो, हॅव, हॅज, हॅड प्लस V3. हे 2 इम्पॉर्टंट नियम आहेत. ज्यावेळी आपण 2 टाइमलाइनला टच करतो, whenever we touch 2 timelines at the same time, either past present or past future, ज्याही वेळी, just we should have that maturity, right? And we should be able to observe and analyze, and we should be able to differentiate whether I'm touching 1 timeline or 2 timeline. अगर मुझे ये चीज समझ में आई ना कि मैं 2 टाइमलाइन को टच कर रहा हूँ यार यहाँ पे, तो मुझे V1 V2 से काम नहीं चलेगा. V2 तो मैं तब यूज करता हूँ जब मैं पास्ट को टच करता हूँ. V1 तो मैं तब यूज करता हूँ बॉस जब मैं प्रेजेंट और फ्यूचर को टच करता हूँ. बट यहाँ पे तो मैं 2 टाइमलाइन को टच कर रहा हूँ, पास्ट और प्रेजेंट को, तो मुझे V3 चाहिए. और V3 अकेला नहीं होता है, वो हैव, हैज और हैड के साथ होता है. फिर यहाँ पे कुछ रूल्स है, वो बेसिक है, आपको पता है. अब मुझे बताएं, ही इज अब्सेंट, ही वाज अब्सेंट, ही विल बी अब्सेंट, आइडिया एक ही है, वो अब्सेंट है, यही आइडिया है, सिर्फ टाइमलाइन चेंज हो रही है उसकी, अलग अलग टाइमलाइन में चेंज है. अब्सेंट है वही आइडिया, पास्ट में अब्सेंट था, फ्यूचर में अब्सेंट रहेगा, 3 दिन से अब्सेंट है, 2 टाइमलाइन को टच करके, द सेम आइडिया टचिंग डिफरेंट टाइमलाइंस, दैट्स इट. तो फिर मुझे बताइए, ये जो V1 का V2 हो गया, इस का जो V2 वॉज हो गया, आप मुझे ये बता पाएंगे कि इस का V3 क्या होगा? कैन यू राइट इन योर कमेंट बॉक्स, इस का V3 क्या होगा? शायद कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा. बिन, ओके, वेरी गुड, ब्रिलियंट, राइट. इसका V3 होगा बिन. वेरी गुड, गणेश सर, ओम प्रकाश जी, राइट राइट, अमीना, प्रियंका,
ब्रिलियंट, राइट. सब लोगों ने लिखा कि राइट. सिद्धि, भक्ति, good to know these answers. Aditi, Usha, Mali, right. Brilliant, brilliant, right. So इसका जो V3 है, that is been. ह्या बेसिक गोष्टी आपल्याला माहित असणं गरजेचं. दॅट्स इट. बाकी काहीच नको आपल्याला. दॅट्स इट, राईट. बऱ्याचदा आपल्याला टेकन, ड्राईव्ह, ड्रो, ड्रिव्हन हे माहित असतं, पण इथचा V3 काय असतं, तो बीन असतो हे आपल्याला माहित नसतं. वी जस्ट लुक एट इट. ते बघूया आपण थोडंसं, जस्ट फॉर 2 minutes. तुम्हाला शाळेमध्ये बाई ओरडून सांगायच्या, राईट. बी was, were, and been, right. So this is V1, this is V2, and this is V3. ग्रामरच्या भाषेत याला प्रेझेंट, पास्ट आणि पास्ट पार्टिसिपल असं म्हणतात, पण ते नाही लक्षात ठेवलं तरी चालेल, बिकॉज वी आर कन्सर्न विथ लँग्वेज. मुझे लँग्वेज अच्छी आनी चाहिए, राईट. मग आपल्याला यालाच आपण टू बी म्हणतो मराठीमध्ये, टू बीचे रूपी, टू बीचे रूपे. सो 3 डिफरंट फॉर्म्स ऑफ टू बी. प्रेझेंट टेन्स मध्ये टू बीचे 3 वेगवेगळे प्रकार आहेत, तेही तुम्हाला माहिती आहे, मला सांगायची गरज नको. जस्ट गॉट इट, राईट. बी चे 3 फॉर्म्स प्रेझेंट मध्ये, एम इज, आर, वॉज, वर आणि V3 मध्ये बीन. मग आपल्याला असं लक्षात येईल, एमचा जो V2 आहे दॅट इज वॉज, ईचा पण V2 जो आहे तो वॉज, आरचा जो V2 आहे दॅट इज वर, पण एम इज, आर या तिघांचाही जो V3 आहे दॅट इज बीन. कदाचित बऱ्याच लोकांना थोडंसं माहिती नसेल अशा प्रकारचं रिलेशन. दॅट्स हाऊ इट इज. वी हॅव टू रिमेंबर, राईट. नेहमी लक्षात ठेवायचं, ज्याही वेळी एम V3 असेल दॅट इज बीन, इजचा पण बीन, आरचा पण बीन. याला आपण स्टेटिव्ह वर्ब्स असं म्हणतो. ह्या सगळ्या वर्ब्सला आपण स्टेटिव्ह वर्ब म्हणतो. यालाच आपण हेल्पिंग वर्ब सुद्धा म्हणतो. हेल्पिंग वर्ब्स आपण त्यावेळी म्हणतो ज्यावेळी मुख्य शब्दासोबत हे शब्द येतात. फॉर एक्झाम्पल, ही इज ड्रायव्हिंग अ कार. ही इज ड्रायव्हिंग अ कार, मुख्य शब्द ड्राईव्ह आहे आणि त्याच्यासोबत इज आलेला आहे म्हणून तो हेल्पिंग वर्ब. पण ही इज अब्सेंट, ही इज अब्सेंट अशा वाक्यामध्ये दुसरा काही वर्बच नाहीत, हाच मेन वर्ब आहे, इज, म्हणून स्टेटिव्ह वर्ब, ज्याला आपण असं म्हणतो की स्टेटिव्ह वर्ब. 2 प्रकारचे वर्ब, स्टेटिव्ह वर्ब आणि ऍक्शन वर्ब. स्टेटिव्ह वर्ब मीन्स म्हणजे आपल्याला फक्त स्टेट बद्दल माहिती होती. वी कम टू नो अबाउट दॅट स्टेट. ही इज देअर, आय एम हिअर, शी इज इन मुंबई. या सगळ्या वाक्यातनं आपल्याला ती व्यक्ती नेमकी कुठे आहे इतकं माहित होतं, पण व्हॉट शी इज डुईंग याबद्दल काहीच नाही माहिती. ती नेमकी व्यक्ती काय करते, वी डोंट हॅव एनी आयडिया अबाउट इट. म्हणून त्याला स्टेट बद्दल म्हणून स्टेटिव्ह वर्ब. ऍक्शन वर्ब सिंपल, ही रीड्स अ न्यूजपेपर, शी ड्राइव्हज अ कार, ही टीचर्स इन द स्कूल. रीड, टीच, ड्राईव्ह आपल्याला ऍक्शन बद्दल माहिती होतात, म्हणून हे सगळे ऍक्शन वर्ब्स. स्टेटिव्ह वर्ब्स आणि ऍक्शन वर्ब्स या दोन्ही वर्ब्सचे इंग्रजीमध्ये 3 फॉर्म होतात. सगळ्यांना ऍक्शन वर्ब बद्दल सगळ्यांनाच माहिती आहे. टेक असेल त्याचा सेकंड फॉर्म टूक आणि थर्ड फॉर्म टेकन. ड्राईव्ह असेल, राईट, त्याचा सेकंड फॉर्म ड्रो आणि थर्ड फॉर्म ड्रिव्हन. हे सगळ्यांनाच माहिती आहे. बट वेन इट कम्स टू स्टेटिव्ह वर्ब, स्टेटिव्ह वर्बचे जे 3 फॉर्म आहेत ते बऱ्याच लोकांना कदाचित नसेल माहित. हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. एम इज, आर, वॉज, वर, बीन. एम इज, आरचा V3 बीन, राईट. बी सुद्धा एक V1 आहे, आपण बघितलंय, राईट. विलच्या नंतर आपण नेहमी V1 वापरत असतो. विलच्या नंतर, शॅलच्या नंतर, सगळ्या मॉडल ऑक्झिलरीजच्या नंतर आपण V1 वापरत असतो, राईट. सो V1 इज बी. या फॉर्म मध्ये नाही, पण या फॉर्म मधला बी यूज होत आहे. म्हणून फर्स्ट मध्ये V1 मध्ये बी, एम इज, आर असे 4 टर्म्स, V2 मध्ये वॉज आणि वर, आणि V3 मध्ये बीन एकच टर्म आहे आपल्याकडे. दिस इज द एंटायर ग्रामर. सोपं आहे की नाही ग्रामर इतकं लक्षात ठेवणं? इज इट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर दिस ग्रामर? लक्षात ठेवता येईल? इफ इट इज येस, प्लीज राईट येस इन युअर कॉमेंट बॉक्स. लक्षात राहील सगळ्यांना इतकं ग्रामर? प्रकाश जी, हर्षवर्धन, वर्षा, थँक्यू सो मच, राईट. थँक्यू. अगदी सोपं आहे, राईट. आणि दुसरा नियम काय म्हटलं आपण? हे आपण स्टेटिव्ह वर्ब्स, ऍक्शन वर्ब्सचे 3 फॉर्म आपल्याला माहिती आहे, आपण शिकलेलो होतो. पण आता आपल्याला स्टेटिव्ह वर्ब्सचे लक्षात ठेवायचे आहेत, ऍक्शन वर्ब्सचे येतात. पण एक जो फॉर्म आहे तो V3 आपण एकटा कधीच वापरत नसतो. V3 चा वापर आपण नेहमी हॅव, हॅज आणि हॅड सोबत करतो. बस.
संपलं. इतकंच ग्रामर इंग्रजीमध्ये आहे. द रेस्ट इज जस्ट द कॉमन सेन्स. जस्ट कॉमन सेन्स, बाकी काहीच नको. सगळं कॉमन सेन्स आहे. गेटिंग बॅक टू अवर स्ट्रक्चर्स. आपण आपल्या स्ट्रक्चर्स कडे बघूया. ही इज अब्सेंट, राईट. आपण लिहिले होते ही वॉज अब्सेंट अँड ही विल बी अब्सेंट. आणि आपलं जे वाक्य होतं तो 3 दिवसापासून अब्सेंट आहे. सो व्हॉट इज V3? इजचा जो V3 आपण बीन म्हटलेला, एकदम बरोबर, राईट. इजचा जो V3 आहे तो बीन, कारण कॉन्सेप्ट तीच आहे, आयडिया तीच आहे, टाइमलाईन चेंज होत आहे. पण बीन आपण एकटं नसतं वापरत. वी ऑलवेज यूज V3 विथ हॅव, हॅज आणि हॅड. हॅव, हॅज, हॅड प्लस V3. पण इथे ज्यावेळी आपण म्हणतो की तो 3 दिवसापासून अब्सेंट आहे, वी आर स्पीकिंग फ्रॉम पास्ट टू प्रेझेंट. पास्ट टू प्रेझेंट मध्ये बोलतोय आपण. आपल्याकडे दोनच ऑप्शन्स आहेत, कारण हॅड आपण युजली पास्ट मध्ये वापरतो. 2 ऑप्शन्स आहेत आपल्याकडे, हॅव आणि हॅज. बट दिस इज थर्ड पर्सन सिंग्युलर. छोटेसे नियम आहेत. थर्ड पर्सन सिंग्युलर साठी आपण नेहमी हॅजचा वापर करतो आणि बाकी हॅव. मग मला बीन तर इथे वापरायचं आहे, त्यासोबत हॅज आवश्यक आहे. ही हॅज बीन अब्सेंट फ्रॉम पण नाही, फॉर 3 days. He has been absent for 3 days. Is it clear? Yeah. Is it clear to all of you? Yes, sir. Clear? Yes, sir. मैंने आपको अनम्यूट किया है सब लोगों को, आप बोल सकते. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Simple, right? जब भी मैं 2 टाइमलाइन को Yes, एट अ sir. टाइम टच, Yes, sir. राइट. जहां भी, राइट, whenever I touch 2 टाइमलाइंस, जब भी मैं 2 टाइमलाइन को टच करता हूं, यहां पे मैं ऑफ कोर्स 2 टाइमलाइन को टच कर रहा हूं, पास्ट और प्रेजेंट को, तो मुझे V3 देखना है. जो भी वर्ब हो वहां पे, स्टेटिव हो, एक्शन हो, मुझे कुछ नहीं लेना देना. V3 देखना है. और V3 अकेला नहीं जाएगा, वो हैव और हैज. ऐसे स्ट्रक्चर में तो मेरे पास 2 ही वर्ब्स है, हैव और हैज. हैड तो पास्ट में यूज करते, बिकॉज यहाँ पे वी आर स्पीकिंग फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट. हैव और हैज में से आई नीड टू आयडेंटिफाई कि ही के साथ हैज चाहिए. ही इज बीन अब्सेंट फॉर 3 days. आपण फ्रॉम का वापरतो माहितीये तुम्हाला? 3 दिवसापासून कुठेतरी पाठांतर केलेलं असतं. फ्रॉम म्हणजे पासून, आणि आपण चिपकवतो तिथे फ्रॉम 3 days. दैट्स रॉन्ग. दैट्स रॉन्ग. ऐसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती. अभी आप बोलेंगे ही हैज बीन एब्सेंट फॉर 3 days. कहीं पे भी आप जाके पूछेंगे, जिसको अच्छी अंग्रेजी आती है वो यही स्ट्रक्चर बोलेगा, ही हैज बीन एब्सेंट फॉर 3 days. फ्रॉम नहीं, फॉर 3 days. ही हैज बीन एब्सेंट फॉर 3 days. अगर मुझे ये बोलना है कि वो 2 दिन से खुश है, वो 2 दिन से खुश है, बताएंगे क्या होगा ये स्ट्रक्चर? प्लीज कम ऑन फास्ट. अब इतने स्ट्रक्चर्स तो आपको आने चाहिए. What, sir? What, sir? वो 2 दिन से, तो 2 दिवसापासून आनंदी आहे. He has been happy from. He has been absent for Absent नहीं बेटा, हैप्पी हैप्पी हैप्पी. he has been happy for 2 days. 2 days, राइट. बाकी मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं. He's been happy for 2 days, right? He's been happy for 2 days. वो 4 दिन से दुखी है. Yes. क्या होना चाहिए स्ट्रक्चर? He has been sad for 2 days. 4 days. 4 days. He's been sad for 4 days. Simple, right? He's been sad for 4 days. अब देखिए, how many structures we can come up with this? अब ये तो शुरुआत है ना? ये तो शुरुआत है कि 2 टाइमलाइन को कैसे टच करके एक ही स्ट्रक्चर को हम लोग देख रहे हैं. So he has been sad for 2 days. So when exactly it happens? अगर कोई खुश है, 2 दिन से खुश है, मैं उसे क्या बोलता हूँ? या फिर कोई 2 दिन से दुखी है, he has been sad, right? पण आपण बोलताना काय म्हणतो? Hey, what's the matter यार? क्या बात है यार? What's the matter? Is everything right? है ना? मैं ऐसे बोलता हूँ, सब कुछ ठीक है ना? You have been quite means बराच, right? बराच दुखी है. You've been quite sad for 2 days. Right? अब हम लोग सिर्फ इतनी लैंग्वेज नहीं यूज करते. जैसे हम लोग फ्री लैंग्वेज बोलते समय हम लोग पहले भी कुछ बोलते, बाद में भी बोलते. कोई दुखी है तो उसे जाके ये नहीं बोलते कि यू बीन सैड फॉर 2 days. हम लोग बोलते हैं व्हाट्स द मैटर? काय झालं यार, सांग ना मला. यू कॅन शेअर दॅट विथ मी. यू कॅन शेअर विथ मी. यू बीन क्वाइट सैड फॉर 2 days. आर यू ऑल राइट? दिस इज ऑल वी यूज इन कॉन्व्हर्सेशन. बघितलं तर खूप छोटे छोटे वाक्य असतात, बाकी सगळं आपल्याला येतं, पण वाक्य वापरायला भरपूर मिळतं. सो कॉन्फिडन्स याला काहीच नाही. पण एखाद्याला जाऊन, हे व्हॉट हॅपन,
What happened? Are you all right? You've been quite sad for 2 days. 2 दिवसापासून तू बराच दुखी आहेस. This is how actually we use in conversation. It's pretty simple. It's pretty simple. But हमें ये चीज अच्छी आनी चाहिए. ये चीज जब आती है, कॉन्फिडेंस अपने आप आता है. वो जो फ्री लैंग्वेज है वो तो हम यूज कर ही लेते हैं. जैसे मैंने बोला that involves, that constitute 30% of the language. बाकी वो 30% है. ये है 70% of the language. Right. फिर वो 3 दिन से एब्सेंट है, तो अगर मुझे सवाल पूछना है तो मैं क्या पूछूंगा ना, हाउ लॉन्ग हैज ही बीन एब्सेंट. नया स्ट्रक्चर क्वेश्चन के साथ हाउ लॉन्ग, कब से. क्लियर. अब देखिए, यस, मैं यहां पे हूं, आई एम हियर, राइट, आई एम हियर. मैं यहां पे 2 दिन से हूं, क्या होगा स्ट्रक्चर. मैं यहां पे 2 दिन से हूं, स्ट्रक्चर क्या होगा प्लीज. I have been here for 2 days. Perfect. Right? I have been here for 2 days. Right? I am here. M का ही तो V3 है. Why you are getting confused? And you don't need to get confused. Been को देखे तो confuse होने की जरूरत नहीं. Either it's a stative verb. वो stative verb भी हो सकता है ऐसे स्ट्रक्चर में. I am here. क्या मैं यहाँ पे हूँ? उसी का तो फॉर्म है 2 टाइमलाइन को टच करके. मैं यहाँ पे था. It's simple. I was here. So I have been here for 2 days. मैं 2 दिन से हूँ. फिर आपको कोई ये भी पूछ सकता है कि आप यहाँ पे कब से हो. How long have you been here? अब कंपेयर टू द स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव्ह स्ट्रक्चर से हमेशा इंट्रोगेटिव्ह हे जे प्रश्न असतात हे नेहमी कठीण असतात थोडेसे. वी नीड टू प्रॅक्टिस अ लॉट. याची प्रॅक्टिस आपल्याला जास्त करावी लागते. राइट. सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर मीन्स व्हाट. आप यहाँ पे कब से हो, तुम्ही इथं केव्हापासून आहात. हाउ लॉन्ग हॅज ही बीन अब्सेंट मीन्स तो अब्सेंट केव्हापासून. राईट. आणि याच वाक्यात हाऊ लॉंग हॅव यू बीन हिअर मला जर असं म्हणायचं असेल की तो इथे केव्हापासून आहे, कसं होईल ते वाक्य सांगा. अदिती पाटील प्लीज टेल मी, तो इथे केव्हापासून आहे असं जर वाक्य बनवायचं असेल कसं होईल. यस, भाग्यश्री जी बताएंगे आप. सर हिंदी में क्वेश्चन कीजिए. राइट. वो यहाँ पे कब से है. अब देखिए हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर का मतलब है कि वो है ना, आप यहाँ पे कब से हो. ठीक है. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर का मतलब है आप यहाँ पे कब से हो. अभी मुझे बोलना है कि वो यहाँ पे कब से है. Sir, can I tell the answer? यस प्लीज गो इट. हाउ लॉन्ग. For how long have he been here? फॉर वहां नहीं यूज करेंगे बेटा, फॉर की जरूरत ही अच्छा. नहीं है. हाउ लॉन्ग से शुरू होगा. Okay. How long have he been here? अब देखो है ना, तो क्या गड़बड़ हुई है. हाउ लॉन्ग हैज ही बीन हियर. सर Has या have? हैज, बिकॉज थर्ड पर्सन ही के साथ हम लोग हैज यूज करते हैं. Okay. राइट, बिकॉज थर्ड पर्सन सिंगुलर वी यूज हैज. अब बात होती है फ्लुएंसी वहीं स्टक हो जाती है. बिकॉज अगर हम लोग सोच के अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे हाउ लॉन्ग हैज ही बीन हियर, सो वी नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट. वहां पे बोलना पड़ता है कि हाउ लॉन्ग हैज ही बीन हियर, हाउ लॉन्ग हैज ही बीन एब्सेंट. देखिए हाउ लॉन्ग हैज ही बीन एब्सेंट, यहाँ पे हैज आया हुआ है. वैसे स्ट्रक्चर्स बना हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर. अब मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि वो कब से दुखी है, हाउ लॉन्ग हैज ही बीन हैप्पी. सो वंस दिस आइडिया इज क्लियर दैट ही के साथ हैज ही आता है, इफ यू प्रैक्टिस इट. हमारे ट्रेनिंग में हम लोग वही चीज बताते हैं कि यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट, क्योंकि प्रॉब्लम वो नहीं है. कंसेप्चुअली तो आप लोग समझ गए, बट व्हेन इट कम्स टू यूजिंग दो स्ट्रक्चर्स इन कन्वर्सेशन यू नीड टू बी फ्लुएंट इन दो स्ट्रक्चर्स. तो कोई भी स्ट्रक्चर को इफ यू प्रैक्टिस अ स्ट्रक्चर फॉर 40-50 टाइम्स यू गेट फ्लुएंट इन 3 मिनट्स. आप समझ रहे हैं. कोई भी स्ट्रक्चर हो, कितना भी डिफिकल्ट स्ट्रक्चर हो, उसको बिना देखे 40-50 बार अगर आपने प्रैक्टिस की, 3 मिनट में आप उस स्ट्रक्चर में फ्लुएंट हो जाते हो. This is what the idea is. फ्लुएंसी की आइडिया यही है कि आपको, क्योंकि योर ऑर्गन्स ऑफ स्पीच जे सगळे अवयव आपण बोलताना वापरतो, है ना, योर लिप्स, योर थ्रोट, योर टीथ, हे सगळे हेजिटेट करतात ज्यावेळी नवीन वाक्य असतं. बट इफ यू गिव्ह इनफ प्रॅक्टिस टू दॅट, त्यांना माहितच नाही की ते ही नंतर हॅज आहे. बट वन्स दे कम टू नो, त्यांना एकदा लक्षात आलं की ही के साथ हॅज आता है, दे नेवर हेजिटेट, दे नेवर गेट कन्फ्यूज्ड. And how long has he been absent? How long has he been here? How long has she been there?
ओके, सो हाउ लॉन्ग हैज बीन एब्सेंट, राइट। अब इसी से लेके कितने सारे स्ट्रक्चर्स हम खुद बना सकते हैं। अगर मुझे किसको बोलना है कि भाई दो लोग हैं, दो फ्रेंड्स है, वो बहुत एक दूसरे से बहुत हमेशा साथ में रहते हैं, मुझे उनको पूछना है कि भाई आप लोग कब से फ्रेंड्स हो, आप लोग कब से फ्रेंड्स हो, क्या होगा ये स्ट्रक्चर, आप लोग कब से फ्रेंड्स हो, How long have you been friends? राइट। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, क्या होगा, हाउ लॉन्ग, Have you been friends? Have you been a friend? How long have you been a friend? फ्रेंड्स नहीं आएगा, है ना, हाउ लॉन्ग, है ना, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन फ्रेंड्स, ओके, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन फ्रेंड्स। अगर किसी को आपको पूछना है कि आप कब से शादीशुदा हो, प्लीज कैसे How पूछे, long have you been married? राइट, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड। अब मुझे नहीं बताने की जरूरत है, आप लोगों को समझ गए, राइट। द मोमेंट यू आस्क दिस क्वेश्चन कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड एंड हाउ लॉन्ग समबडी हैज बीन फ्रेंड्स और व्हाटएवर, of course you're touching two timelines, touching two timelines. So speaking from past to present, आपण पास्ट आणि प्रेझेंट दोन टाइमलाइनला टच करून आपण बोलतोय. आय डोंट नीड टू थिंक. पहिल्यांदा समजण्यासाठी ठीक आहे यू कॉन्सेप्ट की दो टाइमलाइन को टच करते, बट वन्स यू प्रॅक्टिस इनफ ऑफ स्ट्रक्चर्स यू डोंट नीड टू थिंक इट ऑल. त्याच्यानंतर आपल्याला विचार करायची मुळीच गरज नाही, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन फ्रेंड्स? अगर मुझे बोलना कि यार हम लोग तो है ना 10 साल से फ्रेंड्स है, कैसे होगा स्ट्रक्चर? हम लोग 10 साल से फ्रेंड्स है. We are friends from 10 years. देखिए आप फिर से वही We have been friends for 10. परफेक्ट. वी हैव बीन फ्रेंड्स. वी आर नहीं होगा, क्या होना चाहिए स्ट्रक्चर? वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 10 years. Is it clear to all of you? Yes, sir. Anna? Yes, sir. Right? Simple structure. We have been friends for 10 years. Right. I have been here for 3 days. Right? What does it mean? मैं यहाँ पे 3 दिन से हूँ. Right? मैं यहाँ पे 3 दिन से हूँ. अब मुझे बताइए, मैं जब ये बोलता हूँ कि मैं 3 दिन से हूँ, टुडे इज फ्राइडे, तो मैं यहाँ पे कब से होगा? आज सर शुक्रवार आहे, मी बुधवारपासून होतो, बरोबर? असं पण मला म्हणता येईल ना की मी इथे बुधवारपासून म्हणता येईल की नाही? Yes, sir. मग माझ्याकडे 2 पॉइंट्स येतात अशा वाक्यामध्ये. अगदी सोपे आहे ना, सोपे अगदी आहे बघा. राईट, 3 दिवस आहे ना, 3 दिवसापासून मी इथे. सो दिस इज नाव. राईट, आज कुठला दिवस आहे? फ्रायडे. राईट, मग तिसऱ्या दिवशी कुठला असेल तो? वेन्सडे, बरोबर? म्हणूया आपण की वेन्सडे पासून, तेव्हापासून आहो. बघा, I have been here for when. राइट, यही चीज मैं बता रहा हूँ. I have been here You use since. from sir. परफेक्ट. किसी ने भी सिंस यूज किया, ब्रिलियंट. यहाँ पे मुझे ये चीज देखने, देखिए यहाँ पे देखिए मैंने 2 पॉइंट्स बनाए हैं. मैं पास्ट से प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ. इस पॉइंट को जब भी मैं टच करता हूँ तब मैं फॉर यूज करता हूँ. इस पॉइंट को जब भी मैं टच करता हूँ देन आई यूज सिंस. मैं सिंस का इस्तेमाल करता हूँ. अब देखिए फॉर हम लोग तब यूज करते हैं बोलते समय जब उतना समय बीत चुका है. बघा, मी इथे 3 दिवसापासून आहे, याचा अर्थ बोलते वेळेस 3 दिवस पूर्ण झालेले आहे. मग ते कुठे पूर्ण झालेत? इथे पूर्ण झाले. आपण कुठलंही वाक्य बोलताना बघायचं इतका वेळ संपलेला आहे की नाहीये. मग मला असं म्हणायचं असेल, तेच वाक्य मी असं पण म्हणू शकतो की मी बुधवारपासून आहे. मग मला असं म्हणायचं असेल की मी बुधवारपासून आहे, मला कुठेतरी पास्ट पॉइंटला टच करावं लागेल, एक्झॅक्ट मोमेंटला, पास्ट मध्ये जाऊन. मग तिथे जाऊन मला टच करायचं असेल तर देन आय यूज सिन्स. सिंपल. फक्त तुम्हाला हे असं आहे ना, पास्ट टू प्रेझेंट इतकं बघून घ्यायचं, एक ॲरो बनवून घ्यायचा पास्ट टू प्रेझेंट, आणि हे सुरुवातीला करावं लागेल 100-150 वाक्याची प्रॅक्टिस करतपर्यंत. नंतर यू बिकम कम्फर्टेबल. राईट, यू डोंट गेट स्टक एट ऑल. मग कुठेच तुम्हाला अडचण येणार नाही. द टाइम की बात है, अमाउंट ऑफ टाइम, देन वी यूज फॉर. बट कब से एग्जैक्टली शुरू हुई है तो फिर सिंस. अभी जैसे बोला वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 10 years. जर मला असं म्हणायचं असेल की आम्ही बालपणापासून मित्र आहोत, अब मुझे बताइए बालपण पास्ट मध्ये असेल की इथे असेल? पास्ट सर, पास्ट चाइल्डहुड. मध्ये. मग आपल्याला इथे चाइल्डहुड साठी मग आपल्याला सिन्स वापरावं लागेल की फॉर वापरावं लागेल?
Since. Since we have been friends since childhood. Since my childhood, since our childhood. From my Isn't it simple? child, we are friends. We have been friends since our childhood. Okay, we have been friends since our childhood. क्योंकि पीछे जहां भी जाके मुझे टच करना होता है तब सिंस यूज करूंगा, यहाँ पे मैं फॉर यूज करूंगा. राइट, अब मुझे अगर ये बोलना है फॉर एग्जाम्पल कि आई हैव बीन मैरिड फॉर 2 years, 2 साल से मैं शादीशुदा हूं, तो ऑफ कोर्स मैं ये कब बोलूंगा? 2 साल होने के बाद ही बोलूंगा ना. राइट, तो ये फॉर है, 2 साल यहाँ बीत चुके हैं इसलिए फॉर. अगर मुझे ये बोलना है इसका मतलब 2021 है, अगर मुझे बोलना है कि मैं 2019 से शादीशुदा हूं तो मैं फॉर लगाऊंगा कि सिंस लगाऊंगा? सिंस लगाऊंगा क्योंकि 2019 यहां आएगा ना, ये पास्ट टाइम है. गॉट इट? इज इट क्लियर? Yes, sir. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्रीटी सिंपल, बहुत आसान है ये. आई होप कि दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. राइट, बस ये पॉइंट निकाल लीजिए. राइट, आप लोग प्रेजेंट को टच कर रहे हैं या फिर पास्ट में जाके टच कर रहे हैं. अगर प्रेजेंट को टच कर रहे हैं, यहाँ पे उतना समय बीत चुका है, विल यूज फॉर. पास्ट में जाके मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सारे यहाँ पे इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जितने भी एग्जाम्स, वेदर इट्स बैंक प्रोबेशनरी, वेदर इट्स असिस्टेंट कमांडेंट, राइट, बीएसएफ का हो या फिर सारे यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, वेदर इट्स क्लरिकल और बैंक हो, सब कुछ फॉर और सिंस पे कम से कम 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं. बट हम लोग उस एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं देख रहे. वो भी क्या देखते, दे ऑल्सो है ना, दे वांट टू चेक आउट योर फंक्शनल इंग्लिश. आपकी फंक्शनल इंग्लिश देखना चाहते हैं. बिकॉज आई एम एन एजुकेटर विद अन अकेडमी एज वेल. मैं अन अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ. सो जस्ट फंक्शनल इंग्लिश पे होती है. वो लोग ग्रामर नहीं देखते, वो देखते हैं फंक्शनल इंग्लिश कितनी अच्छी है आपकी, और वहीं से ग्रामर पूछे जाते हैं. यही कॉन्सेप्ट्स होते हैं छोटे छोटे. हर एक एग्जाम में फॉर और सिंस पे ये चीज जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इस पे कम से कम 2 से 3 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं हर एक एग्जाम में. फॉर द स्टूडेंट्स, जो लोग भी स्टूडेंट्स है जिनको मे बी दे प्रिपेयरिंग फॉर सर्टेन एग्जाम्स. अब मुझे बताइए, अभी हम लोग 2 टाइमलाइन को टच कर रहे हैं, बीन का इस्तेमाल कर रहे हैं. बीन का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सारे स्टेटिव वर्ब्स हैं. जरूरी नहीं है मुझे कि बीन का ही इस्तेमाल करना है. मुझे तो चाहिए जब भी मैं 2 टाइमलाइन को टच करता हूं, मुझे V3 चाहिए, और V3 के साथ फिर हैव या फिर हैज जो भी आएगा. तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि यार मैं समीर के साथ 2 दिन से बात नहीं की. मी समीरशी 2 दिवसापासून नाही बोललेलो. मी समीर सोबत 2 दिवसापासून नाही बोललेलो. मला सांगा, एम आय टचिंग 1 टाइमलाइन और 2 टाइमलाइन्स? 2 टाइमलाइन्स. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं 2 टाइमलाइन को टच कर रहा हूँ. Yes, sir. राइट, मैं समीर से 2 दिन से मैंने बात नहीं की है. ठीक है, तो बताइए कैसे होगा ये स्ट्रक्चर? I didn't spoke a single word for 2 days with Samir. देखिए प्रकाश सर, अब Since फिर से 2 वही days, गलती हो I रही. haven't spoken. ब्रिलियंट, Hello, sir. ब्रिलियंट. देखिए है ना, Since 2, I I haven't haven't spoken. talked to Samir, right? ऐसे नहीं बोल सकते हम लोग. I haven't talked to Samir for 2 days. सही है नहीं है, Yeah. गलत है. देखिए what is talk. I didn't speak single word for 2 days with Samir. Is this correct or wrong? No, it's wrong. It's wrong, sir. सर इसलिए वो रॉन्ग है क्योंकि वो पास्ट टाइमलाइन हो गई, कंप्लीट पास्ट टाइम लोग. आई डिडंट का यूज किया, डिड हम लोग पास्ट के लिए यूज करते. प्रकाश सर, इज इट क्लियर? प्रकाश जी, डिड हम लोग पास्ट टाइमलाइन के लिए यूज करते. अभी हम देखिए, जब हम लोग ऐसे बोलते कि मैं 2 दिन से समीर से बात नहीं की, आप ही मुझे बताइए कितने टाइमलाइन को टच कर रहे हैं हम लोग? 2 timelines. 2 2 timelines. टाइमलाइन. सो अभी हमने क्या सीखा था कि जब भी हम लोग Yes, 2 yes. टाइमलाइन को टच करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? V3 इस्तेमाल करते हैं. V3 use करते. Yes. V3 अकेला नहीं जाता, वो हैव और हैज के साथ Have जाएगा. been. Yes, sir. Yes. राइट, तो आई के साथ हैव जाएगा. आई Have हैवंट टॉक्ड टू समीर फॉर haven't 2 talked days. to Samir. Yes. That correct. That one correct. ओके, राइट. अगर मुझे ये बोलना है कि सुबह से मैं समीर को नहीं मिला, अब कोई दूसरा बताएंगे प्लीज. राइट, सुबह से मैं I समीर को haven't met Samir.
I haven't met Samir I haven't met since morning. Samir. Since morning. राइट क्योंकि Good सुबह से morning. सुबह मॉर्निंग तो सुबह गई तो सिंस आएगा. I haven't met Samir since morning. Brilliant. Okay, I haven't met Samir since morning. Is it clear? Yes, sir. Okay. बाकी लोग कोई जवाब नहीं दे रहे. Yes, sir. Yes, sir. Right? Yes, sir. I haven't met. Please थोड़ा सा स्पीकर देख लीजिए. Right? So it's quite simple. We don't need to get confused at all. तो यहाँ पे मुझे बीन से क्या लेना देना? मुझे बीन से कुछ नहीं because the stative verb was there. That's why है ना. I had to use that been. अब यहाँ पे मुझे stative ना action verb है मेरे पास ना. तो मैं V3 यूज करूंगा. मैं बोलूंगा कल से मैंने कार नहीं चलाई. मैंने कल से कार नहीं चलाई. क्या होगा स्ट्रक्चर? I haven't. car I- for yes, I haven't driven. I haven't drove car. I haven't driven a car Drove since yesterday. Right? Since अब देखिए आप लोग अभी है ना यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट. आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बट आपको क्या करना पड़ेगा यार. ड्राइव का V3 क्या है? ड्रिवन, टेकन है ना. तो ये सारी चीज यहाँ पे Hello, टाइम sir. टेकिंग हो रहा है. ये टाइम टेकिंग हो रहा है. या यस Hello. यस. So can't we use the car here instead of a car? If you mean that a particular car, then you can use. Yeah, okay. Right? अब बोलते समय, right? Having a conversation. Okay. If you're talking to somebody and you know that, and the person you're talking to, he also knows that, which car you're talking about, then you can use the, right? Okay, thank you, sir. Right. Yeah, pleasure. So I haven't driven a car since yesterday. अब प्रॉब्लम क्या हो रही? V3 के लिए हम लोग स्टक हो जाएंगे. तो मुझे V3 आने चाहिए. कॉन्वर्सेशन में जितने भी V3 उतने आने चाहिए. तो ये स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे ऐसे नहीं बनाएंगे. Right? We need to practice. मुझे होनी चाहिए स्ट्रक्चर. I haven't driven a car since yesterday. यार 15 दिन से मैंने कार नहीं चलाई. I haven't driven a car for 15 days. Isn't it simple? Yes, yes, sir. It's simple. Yes, sir. सिंपल है ना? also बहुत very आसान है. Doesn't sound is coming. हाँ हाँ मैंने कर दिया उनको म्यूट. है ना. हम लोग थिएटर में चले जाते मूवी देखने के लिए. है ना. मूवी देखने के लिए थिएटर में चले जाते. इमेजिन अ सिचुएशन. मैं आज सिर्फ मेरे पास पीपीटी भी है, PDF पीपीटी सब रेडी है. बट इस स्टाइल से पढ़ाना थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आपको है ना मैं लिख के बता रहा हूँ चीजें. थोड़ा सा चेंज. Imagine a situation that you go to watch a movie. आप थिएटर में मूवी देखने चले गए. But the moment you enter a theater, you realize that the movie has already started. आपको पता चला जैसे थिएटर में आपने एंटर किया, आपको पता चला कि मूवी तो शुरू हो चुकी है यार. बट आपको नहीं पता कि कब शुरू हुई. आपने 200 रुपए दिए, आपको ये डर है ज्यादा मिस तो नहीं हो गई होगी. तो हम लोग बगल वाले इंसान से पूछते, शेजाऱ्याजवळ जाऊन बसून आपण शेजाऱ्याला प्रश्न विचारतो, बाबा रे किती वेळ झाला. राईट. How long has been the movie started? कोई जरूरत नहीं है. Right? How long has long it been? had it? There are बिल्कुल Okay. certain standardized structures. There are certain standardized structures. How long has it been? Means what? अब यहाँ पे मूवी का नाम तो बिल्कुल नहीं है, बट कॉन्टेक्स्ट है ना, संदर्भ असतो बोलताना. संभाषणामध्ये नेहमी संदर्भ असतो. सो पीपल युजली डोंट गेट कन्फ्युज्ड बिकॉज दे नो व्हॉट वी आर टॉकिंग अबाउट. त्यांना सहज लक्षात येतं आपण कशाबद्दल बोलतो. चित्रपटगृहात आहोत, शेजाऱ्याला विचारतोय किती वेळ झाला, त्याच्या सहज लक्षात येईल की वी आर टॉकिंग अबाउट अ मूवी. आपण फक्त इतकं विचारलं हाऊ लॉंग हॅज इट बीनचा अर्थ होतो किती वेळ झालेला आहे. राईट. आतापर्यंत किती वेळ झालेला आहे. ऑफकोर्स कुठल्या गोष्टीला चित्रपट सुरू हो त्याला ते कळतं. राईट. सो ये जो स्ट्रक्चर है सेम पैटर्न पे बेस्ड है. यहाँ पे जो इट है इट इंडिकेट्स टाइम. लक्षात ठेवायचं. इट इंडिकेट्स टाइम. यू नो हाउ वी रीड द टाइम. आपण वेळ कसं सांगत असतो. आपण म्हणतो इट्स 10 o'clock नाउ. ऐसे पढ़ते हम लोग. राइट. सॉरी. राइट. राइट. इट्स 10 o'clock नाउ. ऐसे पढ़ते हम लोग.
right? It was 10:30 at the time. It का use करते हम लोग. Time it's 7:30 now. It's 5:30 now. We always use it to tell time, to read time. बरोबर? मग ह्या स्ट्रक्चर मधला पण जो it आहे, that time, it indicates time. So never get confused. It है, it के साथ हमेशा has ही आएगा. अब देखिए यहाँ पे V3 क्या है, यहाँ पे V3 क्या है, यहाँ पे क्या दो टाइमलाइन को टच कर रहा है. यहाँ पे अगर उसने जवाब दिया, आपने पूछा कि भाई कितना समय हुआ, उसने जवाब दिया कि 2 मिनट हो गए, वो बोलेगा इट्स बीन जस्ट 2 मिनट्स. इट्स बीन जस्ट 2 मिनट्स, 2 मिनट हो गए. यहाँ पे दो टाइमलाइन को क्या टच कर रहा है, यहाँ पे दो टाइमलाइन को ये 2 मिनट टच कर रहा है. टाइम ही दो टाइमलाइन को टच कर रहा है. सी, आपने थिएटर में एंटर किया, जैसे एंटर किया वैसे मूवी शुरू हो गई थी. जैसे आपने एंटर किया वैसे मूवी शुरू हो गई थी. अगर यहाँ पे इस सर्कमस्टांसेस में मूवी 2 मिनट पहले शुरू हुई थी, तो 2 मिनट पहले ये पास्ट होगा कि प्रेजेंट होगा? 2 मिनट चीज जो पहले हुई है वो पास्ट है कि प्रेजेंट है? पास्ट. एक सेकंड पहले भी जो चीज हो गई त्याला सुद्धा आपण पास्टच कन्सिडर करतो. बरोबर? मग तुम्ही ज्यावेळी पोहोचलात त्याने उत्तर दिलं की 2 मिनिटं झाले, चित्रपट 2 मिनिटं अगोदर सुरू झालेला आणि तुम्ही पोहोचला 2 मिनिटानंतर. मग चित्रपट सुरू झाला तेव्हापासून तुम्ही पोहोचेपर्यंत जी वेळ आहे ती तुम्हाला माहिती नव्हती. तेच तुम्ही त्याला विचारले, बाबा रे तेव्हापासून आतापर्यंत किती वेळ झाला? त्याचं उत्तर आलंय 2 मिनिटं. तर हे जे 2 मिनिटं आहेत, हे 2 मिनिटं इट टचेस द पास्ट अँड प्रेझेंट टू टाइमलाईन. इतका वेळ झालेला. बघा, इट्स 10 o'clock, आपण प्रेझेंट बद्दल बोलतो की आता 10 वाजलेला आहे. त्यावेळी 7 वाजले होते. इट वॉज 7 o'clock इन द इव्हनिंग. संध्याकाळच्या 7 वाजले होते. इट वॉज पास्ट. पण आपण ज्यावेळी असं म्हणतो की इट्स बीन 10 मिनिट्स किंवा इट्स बीन 2 मिनिट्स, तर हे इट्स बीन वापरल्यानंतर ती जी वेळ आहे ती वेळ तेव्हापासून आतापर्यंत असं सांगते. 2 टाइमलाईनला टच करून. तो म्हणाला की 2 मिनिटं झाले, सो इट्स बीन जस्ट 2 मिनिट्स. 5 मिनिटं झाले असतील तर इट्स बीन 5 मिनिट्स. 15 मिनिटं झाले असतील तर इट्स बीन 15 मिनिट्स. किती होऊ शकतं? 10 वर्ष. इट्स बीन 10 इयर्स. इट्स बीन 2 months. इट्स बीन 15 days. इट्स बीन 4 days. सिंपल. पण या वाक्यामध्ये नेहमी डोंट गेट कन्फ्युज. इथे इट्स जे आहे, हे इट्स जे आहे इट हॅज, त्याला असं आपण असं वाचतो, राईट? इट्स असं वाचतो पण ऍक्च्युअली इट हॅज आहे. त्याला आपण असं लिहिता पण येतं आणि असं बोलता पण येतं. सो डोंट गेट कन्फ्युज. इट इजला पण आपण असं लिहितो, हॅजला पण आपण असं लिहितो. सो इट्स बीन जस्ट 2 minutes मीन्स इट हॅज बीन जस्ट 2 minutes. सेम कॉन्सेप्ट. ते 2 मिनिटं आणि टचिंग 2 टाइमलाइन्स. इज इट क्लिअर? Yes, sir. सगळ्यांना लक्षात आलंय? Yes, Oh, sir. clear. हो सर. Yes. Right. So how long has it been? Standardized structure है. हम अपने मन से कुछ भी नहीं बोलेंगे. How long has it been means कितना समय बीत चुका है. Right. The thing is that आपण इथे संदर्भ होता. बोलताना आपल्याकडे संदर्भ होता. And just consider that there is no context at all. संदर्भ नाहीच आहे अँड आय हॅव टू मेक द कम्प्लीट स्टेटमेंट. मला कम्प्लीट स्टेटमेंट बोलायचंय. त्याला सरळ विचारायचंय की बाबा रे मूवी सुरू होऊन किती वेळ झाला? मूवी सुरू होऊन, चित्रपट सुरू होऊन किती वेळ झाला? असं पूर्ण वाक्य बनवा. बऱ्याचदा संभाषणामध्ये अशी वेळ येत नाही, अशी गरज पडत नाही, पण समजा की मला पूर्ण वाक्य बनवायचंय की चित्रपट सुरू होऊन किती वेळ झाला. येस. How long movie is going on? How long has it been? Right. अब मुझे बताइए, आप जब गए तो मूवी शुरू हुआ था, तो मूवी यहाँ शुरू हुआ होगा, बराबर है? तो यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ से कर रहे तो मैं since यूज करूंगा. How long has it been since? Of course, आप जब पहुंचे तब मूवी शुरू हो गया था. तो मूवी शुरू होने वाली जो प्रोसेस थी वो कब हुई होगी? पास्ट में हुई होगी, प्रेजेंट में हुई होगी कि फ्यूचर में? पास्ट में. तो फिर मुझे यहाँ सोचने की क्या जरूरत है? हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस द मूवी स्टार्टेड? Sir, the sentence like how long movie is going on? ना, नहीं, वो अलग बात है.
how long has the movie been going on, that is अलग. Movie कब से चल रही है, Going on, yes. right? Movie कब से चल रही है, that is different structure. Okay. इसी का कंटिन्यूअस फॉर्म आता है, वो अलग से आता है, उसका पैटर्न अलग है, स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा बट वो अलग है. हाउ लॉन्ग हैज द मूवी बीन गोइंग ऑन, राइट? बट हम लोग ऐसे नहीं पूछते ना, हम पूछते कि कितना समय हुआ मूवी शुरू होके. हम कब से मूवी चल रही है, हम लोग तब पूछते हैं कि बच्चे देख रहे हैं, हमें पता है कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और वो बोल रहे कि नहीं है ना, तो हम पूछे कि कब से चल रहा है टेलीविजन, राइट? तो ऐसे समय पे वो अलग बात है, यहाँ पे थोड़ा सा सेंस अलग है. ओके, सो हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस द मूवी स्टार्टेड. जो भी एक्शन शुरू हुई यहाँ पे, एक सेकंड भी अगर पहले होता है, स्टिल वी कंसीडर इट एज पास्ट, उसको हम लोग पास्ट ही कंसीडर करते हैं. तो सिंस के बाद जो भी चीज होगी वो सिंपल पास्ट टेंस में आएगी, बिकॉज द मूवी स्टार्टेड इन द पास्ट. अब मुझे बताइए, मेरा एक सिंपल सा सवाल है, ये कॉमन सेंस है कि ग्रामर है? कॉमन सेंस सर. कॉमन सेंस है ना. अगर कोई चीज पास्ट में शुरू हुई तो पास्ट यूज कर, उसमें ग्रामर की क्या जरूरत है, राइट? क्योंकि आप 2 मिनट के बाद एंटर हुए, आपको नहीं पता, एक सेकंड भी पहले होगी तो वो पास्ट ही होगा. सो हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस द मूवी स्टार्टेड. मुझे अगर किसी को पूछना है कि बाबा रे तुला जॉब मिळून किती दिवस झाला, कैसे होगा वो स्ट्रक्चर? How long has it been since you have got the job? Right. Yeah, please. Would you please repeat? How long has it been since you have got the Perfect. job? Right. How long has it been since you got a job? Right? अब get a job, मुझे ये पता होना चाहिए, get a job means job मिलना, इसका past tense क्या होगा? Got a job. How long has it been since you got a job? How long has it been since you got married? ये स्ट्रक्चर में कहीं चेंजेस नहीं आएंगे. हाउ लॉन्ग हैज इट बीन ऐसे ही रहेगा, स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर है. ईट है, ईट के साथ हैज ही आएगा, बिकॉज द स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट टाइम. हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस यू गॉट अ जॉब? हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस यू गॉट मैरिड? एंड हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस यू बिकेम फ्रेंड्स? इज इट क्लियर? यस सर. Yes, sir. Okay, so okay. Hello, sir. Yes. I'm there. Just hold on. So you will Yes. send this PDF to the group. Yes, ma'am. Can we get this PDF? The PDF. Yeah. Yeah, no issues. Right? Okay. I can give it to you, no issues. You're okay, sir. Thank you. So look at it. But yeah, I know, means just it's one concept. Okay, you just try to understand it. PDF is secondary, right? Is it visible to all of you? सबको ये दिख रहा है? Yes, sir. Right. यस सर. अब मुझे बताइए, हम लोग कहीं बार सर्कमस्टेंसेस में ऐसी चीजें यूज करते हैं. I've never done this. यार ये चीज मैंने कभी नहीं की, है ना, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कभी गलती नहीं की, मैं कभी फेल नहीं हुआ हूँ. जब हम लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, आप मुझे बताइए, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करिए, एनालाइज करिए और बताइए कि सही में मैं कितने टाइमलाइन को टच कर रहा हूँ, किती टाइमलाइनला मी टच करतो. मी ज्यावेळी असं म्हणतो की मी कधीच खोटं बोललेलो नाही. 2 timeline. Timelines, past and present. इतना कॉमन सेन्स तो सबके पास है, राइट? मी जर असं म्हणेन मी कधीच गाडीवरनं पडलेलो नाही, बाईकवरनं कधीच पडलेलो नाही, कितने टाइमलाइन को टच कर रहा हूँ? 2 टाइम. 2 times. Past and present. राइट. मैं बोलता कि मैं कभी फेल नहीं हुआ, 2 टाइमलाइंस. तो फिर अगर मैं 2 टाइमलाइंस को टच कर रहा हूं, मुझे पता है, तो फिर मुझे स्ट्रक्चर में कंफ्यूज होने की जरूरत क्या है? फिर मुझे वही तो चीज करनी है कि हैव नेवर डन दिस, है ना. V3 आया, फिर हैव के साथ कभी नहीं तो नेवर आ गए. I've never lied to anyone. I've never made a mistake. I've never failed. I've never fallen off the bike. अब ये fallen off ये स्टैंडर्ड पैटर्न है, फ्रेजल वो भी इस तरह से यूज होता है. अभी हम लोग I've never fallen from the bike, वो
है ना, वो नॉन ब्रांडेड इंग्लिश हो गई. ओके, तो ये फॉलन ऑफ द बाइक, दिस इज क्वाइट स्टैंडर्डाइज्ड, राइट. आई हैव नेवर मेट विद एन एक्सीडेंट. मेरा एक्सीडेंट कभी नहीं हुआ. मीट विद एन एक्सीडेंट, इसका जो V3 है, दैट इज मीट विद एन एक्सीडेंट. अब मीट विद एन एक्सीडेंट इज अ फॉर्म. इंग्लिश में एक्सीडेंट के लिए दो ही वर्ड है, टू मीट विद एन एक्सीडेंट और फिर टू हैव एन एक्सीडेंट. ये टर्म्स मुझे पता होने चाहिए. अब जो भी इंग्लिश फ्लुएंटली बोलते हैं उनको ये सारे टर्म्स पता होते हैं, वो प्रैक्टिस से आ जाते हैं, एक्सपोजर से आ जाते हैं. आई हैव नेवर हैड कैपुचिनो. कैपुचिनो ये कॉफी ड्रिंक है, मैंने कभी कैपुचिनो नहीं पी है. आई हैव नेवर विजिटेड लंदन, या फिर आई हैव नेवर बीन टू लंदन. मैं लंदन कभी नहीं गया. तो ये सारी चीजों में, ये सारे स्ट्रक्चर्स में आई एम टचिंग टू टाइमलाइंस. Excuse me. So when I touch two timelines, so of course I'll use the same concept. Same concept को मैं use करूंगा. Right? V3 का इस्तेमाल करूंगा, past और present को touch कर रहा हूं, then have has के साथ. So अब मुझे बताइए, यहाँ पे अगर मैं same concept use कर रहा हूँ, I've never lied to anyone. So is it a grammar or the Mentos moment? मैं ये सारे moments को the Mentos moment बोलता हूँ. मैं अगर have plus V3 यूज कर रहा हूँ ऐसे स्ट्रक्चर्स में, ये ग्रामर है कि मेंटोस मोमेंट है? Confused? What does Mentos stand for? It is grammar. Is it grammar or Mentos moment? It's a Mentos moment. ग्रामर तो हमने सीख लिया पहले. अभी हम लोग जब एप्लीकेशन करते हैं, जब हम लोग एप्लीकेशन करते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं. हम लोग एनालाइज ये कर रहे हैं कि भाई दो टाइमलाइन को टच कर रहा हूं. अब मुझे बताइए, आई हैव नेवर लाइड टू एनीवन, इट्स ओके. हम लोग कभी कभी ऐसे बोलते हैं, कोई चीज करते समय, कोई चीज करने के बाद हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ये चीज मैंने कभी नहीं की, ये चीज मैंने कभी नहीं की. वो इंग्लिश में I have never done this. I have never done this. Brilliant. I have never done this. You use the same concept because you're touching two timelines. I have never done this. इस स्ट्रक्चर को क्या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, यार पहली बार ये मैंने किया है? I have done Yes. बोल सकता हूँ. तो Yes, मैं जब I have ऐसे done this बोलता हूँ, first time. I have done this for the first time. ठीक है, I have done this for the first time. या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, this is the first time I have ever done this. बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. This is the first time I have ever done this. Right? देखिए एप्लीकेशन देखिए आप लोग, है ना. तो मुझे बताइए, this is the first time I have ever done this. This is the first time I have ever fallen off the bike. यार पहली बार है मैं बाइक से गिरा. जब मैं ऐसे बोलता हूँ कि पहली बार है मैं बाइक से गिरा, कितने टाइमलाइन को टच कर रहा हूँ? बताइए. दो टाइमलाइन को. क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पहली बार है. पहली बार कब? पहली बार है मेरे लाइफ में, पहली बार है. राइट? मैं यही बोल रहा हूँ ना कि पहली बार है यार मैं बाइक से गिरा. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव फॉलन ऑफ द बाइक. भाई यू आर टॉकिंग अबाउट योर एंटायर लाइफ. आप अपनी लाईफ के बारे में बात कर रहे हो. तुम्ही तुमच्या आयुष्याबद्दल सांगता की मी आजपर्यंत माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदा पडलो. माझ्या आयुष्यात आतापर्यंत पहिल्यांदा पडलो याचा अर्थ काय? आपण दोन टाइमलाइनला टच करतोय, बरोबर? राइट, पास्ट और प्रेजेंट को टच कर रहे हैं. Yes, sir. फिर वहां पे वही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा. आई हैव नेवर फॉलन ऑफ द बाइक. राइट, हैव के बाद फॉलन ऑफ. Is it difficult? No, not difficult at all. So never का opposite word क्या है? Ever. Ever. Always. Right, perfect. And never का जो opposite word है, that is ever. मैं किसी को बोलूंगा, भाई कभी आपने गलती की है क्या? आपने कभी गलती की है क्या? कैसे बनेगा ये क्वेश्चन? Have you ever done a mistake? Have you ever made a mistake? Have you Made a ever made a mistake? Right. Done a mistake ये फॉर्म ही नहीं है. मिस्टेक के साथ डू हम लोग कभी नहीं लगाते हैं. मेक लगाते हैं, मेक अ मिस्टेक. हैव यू एवर मेड अ मिस्टेक? अब क्वेश्चन में भी मैं दो टाइमलाइन को टच कर रहा हूँ. हैव यू एवर मेड अ मिस्टेक? इज इट क्लियर? क्या आपने कभी झूठ बोला है? हैव यू एवर लाइड? क्या आपने कभी कार चलाई है? Have you ever driven the A car? car? Perfect. Right. Have you ever driven a car? Perfect.
Because I'm using the same concept. I'm touching two timelines. I'm sticking to the same concept. एक ही concept को मैं पकड़ के चल रहा हूँ. अब मुझे बताइए कि मैं प्लेन में बैठा हूं, मैं प्लेन में बैठा हूं और आई एम एंग्शियस एंड नर्वस. फर्स्ट टाइम है मेरी फ्लाइट में, मेरा फर्स्ट टाइम है. दिस इज द फर्स्ट टाइम, राइट? और मैं बगल वाले इंसान को बोल रहा कि आई एम वेरी नर्वस बिकॉज मैं कभी ट्रैवल नहीं किया हूं यार प्लेन से. हम बोलूंगा कि आई हैव नेवर फ्लोन बिफोर. हम लोग फ्लो यूज करते, फ्लाई का जो V3 है दैट इज फ्लोन, राइट? मैं प्लेन से कभी ट्रैवल नहीं किया, इसके लिए हम लोग फ्लाई यूज करते. ट्रैवल्ड बाय प्लेन बोलने से बजाय हम लोग फ्लो यूज करते, तो सब उसमें आ जाता है. आई हैव नेवर फ्लोन बिफोर. क्या बोलूंगा मैं? आई हैव नेवर फ्लोन बिफोर, राइट? आई एम नर्वस, राइट? आई एम नर्वस बिकॉज आई हैव नेवर फ्लोन बिफोर, राइट? ऐसे बोलूंगा मैं, क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ, आज तक मैंने कभी प्लेन से ट्रैवल नहीं किया, फ्लाई नहीं किया, इसलिए मैं नर्वस हूँ. अब मुझे बताइए, यू कम होम, अब घर आते हो एंड यू वांट टू शेयर दिस एक्सपीरियंस विद समबडी एल्स. आप ये एक्सपीरियंस को घर में या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो. आप क्या बोलेंगे? आई एम नर्वस बोलेंगे क्या? हम बोलते कि नहीं यार, प्लेन में मैं आई वाज वेरी नर्वस, ऐसे बोलेंगे, राइट? हेलो, एम आई राइट? Yes, sir. I was nervous on a plane. I was nervous on a plane. I was anxious and nervous on a plane because I have never flown before. बोलूंगा क्या मैं? नहीं. I I had have never flew before. नहीं, क्यों? फ्लो क्यों हो जाएगा? Because it was my मुझे first बताइए, time. have का past tense क्या हो जाएगा? I Have had आएगा. I had been. I Had had के- never flown before. Right. Right. Brilliant. Had के बाद भी V3 आएगा. Had के बाद भी V3 आएगा. अभी हमने देखा था, है ना? Yes, sir. तो क्या होगा? घर आके मैं बोल रहा हूँ, I was very nervous on the flight because I had never flown before. ऐसे बोलूंगा. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे Have, has और had में confusion ये तीन का भी use करते हैं. Yes. Have, has और had. ये स्पीकर्स थोड़ा सा देख लीजिए, राइट? सो घर जाके मैं बोलूंगा क्योंकि the circumstance has become past. स्पीकर्स देख लीजिए, स्पीकर्स देख लीजिए थोड़ा सा. Because the circumstance has become past, तो मैं have नहीं यूज करूंगा क्योंकि वो तो पास्ट हो गए. तो जहां जहां पे भी रिक्वायरमेंट है वहां वहां मैं पास्ट करूंगा. आई एम नर्वस मैंने प्लेन में बोला था उस बंदे से बात करते हुए. घर आके मैं बोलूंगा आई वाज नर्वस. मैं नर्वस था क्योंकि मैंने कभी प्लेन में ट्रेवल नहीं किया था उस मोमेंट तक. अभी तो मुझे एक्सपीरियंस आ गया ना, तो फिर वो हैव का पास्ट हो जाएगा. आई हैड नेवर फ्लोन बिफोर. अब देखिए मुझे, क्या मैंने पास्ट परफेक्ट यूज किया है कि मैंने सिर्फ दिमाग की बत्ती जलाई है? मुझे बताइए, मैं सोच के मैंने पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया कि मैंने सिर्फ दिमाग की बत्ती जलाई है? बताइए. दिमाग चलाया है सिर्फ. मैंने पास्ट परफेक्ट नहीं सोचा ना कि पास्ट परफेक्ट यूज करना है, ऐसा नहीं सोचा ना, क्योंकि यार वो कॉमन सेंस है. यार वो प्रेजेंट था, आई हैव नेवर फ्लोन. अभी पास्ट हो गया, हैव की जगह हैड लगा दिया, इसलिए मैं इसे मेंटोस मोमेंट बोलता हूँ. तो मैं ये बोल रहा हूँ ये पास्ट परफेक्ट है. देखा जाए तो इंग्लिश में इट्स वेरी एडवांस्ड टेंस. People don't understand how to use past perfect. मैं ये बोलता हूँ क्योंकि वो पहले टेंस सीखते हैं, यूज कभी करते नहीं है, सिर्फ वो टेंस सीखते हैं. So you don't need to learn the tense first. आपको टेंस को सीखने की जरूरत नहीं है. इस्तेमाल करते करते, स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते करते अब जब सीखोगे, why past perfect क्यों जरूरत है भाई? मैं जानबूझ के थोड़ी ना यूज कर रहा हूँ past perfect. The situation demands that. I have never, वो past हो गया so had होगा, इससे past perfect बना, मुझे क्या करना है? That is what logical. इसलिए मैं इसे बोलता हूं. अब मुझे बताइए ये ग्रामर है कि इट्स अ मेंटोस मोमेंट? It's the Mentos moment. Right? The Mentos stands for, दिमाग की बत्ती जलाओ. Okay. So that's how it is. So it's not difficult at all.
It's not difficult at all. We just made it difficult. है ना, हम लोगों ने difficult बनाया है. So मुझे लगता है आज के लिए हम लोग यहीं रुक जाते हैं. It's been great being with you. Yes. सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम 2 टाइमलाइन यूज कर रहे हैं? अरे क्यों नहीं पता चलेगा? मुझे बताओ, कौन पूछ रहे हैं? अमीना आप पूछ रहे हैं ना? यस सर. राइट. अमीना मुझे ये बताइए, अमीना बेटा, आप अगर जब ऐसे बोलते सर मैंने जिंदगी में झूठ नहीं बोला, जिंदगी में मैंने कभी झूठ नहीं बोला, राइट, इसका मतलब क्या है यार? मैंने कभी झूठ नहीं बोला. हाँ, तो इसका मतलब क्या? पहले से आप जब पैदा मतलब हुए ये तब से मैंने अभी की पहले बात हो रही है ना? पहले कभी झूठ नहीं बोलती थी, आज भी नहीं बोलती नहीं हूँ. बोलते, ऐसे होगा ना? यस सर. तो ये 2 टाइमलाइन नहीं हुए, पास्ट और प्रेजेंट? यस. इतना कंफ्यूज मत होइए, इतना कंफ्यूज मत होइए. आप जब कभी कोई मूवी देखते हैं, राइट, मूवी देख के आप बोलते यार पहली बार मैंने ऐसी मूवी देखी है. पहली बार का मतलब क्या है? पहली बार का मतलब क्या है? आज तक. ऐसे होगा ना? तो मेरी पूरे लाइफ में जितनी मैंने मूवीज देखी तब से लेके अभी तक, तो जो देखी पहले वो पास्ट और अभी तक, वो पास्ट और प्रेजेंट हो गया कि नहीं हुआ? हाँ सर. सो वी आर टचिंग 2 टाइमलाइंस. यही चीज एनालाइज करना. अगर ये चीज आपको आ गई, ये टेंस तो आएगा, ये स्ट्रक्चर तो आएगा, इस पे जितने भी स्ट्रक्चर से सारे आएंगे, पास्ट परफेक्ट आएंगे. इवन वी कैन स्विच ओवर टू फ्यूचर परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट इन अ वेरी सटल वे. 70% of the language, right, ये सारी चीजें 70% कवर होती, बाकी सब pretty simple stuff. So let's call it a day. कल हम लोग 4 बजे मिलते हैं. It's been great being with you. Right. Shamila ma'am. Yes, sir. Right. People are leaving, right? It's 1:30 already. Okay. It's pretty late. I would like to express Yes. I would like to express my gratitude to our principal and our resource person, Sri Pratish Siddham Shettiwar sir, for making such a very outstanding interactive session today. I declare here the session is over today. Tomorrow we will meet on the same time on the same platform. Thank you for joining us. Once again, thank you, Pratish sir. It's my pleasure. Goodbye. Goodbye. Thank you so much. Thank you so much. Right. We will see tomorrow at 4 o'clock, the same platform. Yes, on the same time. Yeah, same time. Take care. Thank you, sir. My pleasure. My pleasure. My pleasure. My pleasure. Yes. क्या तो तभी नहीं खोलता है जी. नवरात्रि को बंद रखा है क्या?